Hello children, I welcome you all to my YouTube channel. Today we'll be revising chapter number 2 of your book First Flight, class 10 Cbse, that is Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. It is an autobiography of Nelson Mandela. Nelson Mandela was born on 18 July 1918 and he was the first black president of South Africa, and he served as the president of South Africa from the year 1994 to the year 1999, and ultimately he died on 5th of December 2013. So now we will discuss the summary of this story. My dear children, it's a very lengthy chapter and very important as well, but it is a bit complicated also because Nelson Mandela has discussed many things in this chapter, but at the same time we will definitely try to cover up all the important points regarding this chapter, although it's not possible to complete this whole chapter, and already I have prepared a series of videos on this chapter, and you can watch those videos where I have explained the whole chapter line by line, but this is just a summary to give you an overview of this whole chapter. So let's start the summary of this chapter. Long Walk to Freedom is the autobiography of Nelson Mandela, who was the former South African president. This chapter is the extract from the book Long Walk to Freedom. So on your screens you can see this is the actual book Long Walk to Freedom, and so many things are there, so many things are mentioned in this chapter, but what you are studying, what is given in your book First Flight, is actually a part, it is an excerpt, it is an extract of this book Long Walk to Freedom. Well, it says about the other countless people who fought for their freedom. In South Africa, a brutal practice named apartheid was very popular in those days. It referred to the discrimination between people on the basis of their race and color. So my dear children, in this chapter, literally Nelson Mandela has disclosed so many facts regarding his life, and at the same time he has discussed about his people, about the apartheid system, about the discrimination that was a part of South Africa once. So in this chapter actually he has discussed many aspects, but basically there was a time when this apartheid system was in full swing and literally people were discriminated on the basis of their race and color. On your screens also you can see a black boy being beaten by a white. So this was the condition. एक समय था जब साउथ अफ्रीका में ये अपार्थाइड सिस्टम लागू था, जिसके चलते एक बहुत ही एक छोटी नज़र से देखा जाता था जो ब्लैक्स थे उन लोगों को वाइट्स पीपल के द्वारा, और बहुत उनके साथ ज़्यादती होती थी, बहुत कुछ होता था. It was one of the most brutal societies in which dark-skinned people were deprived of their basic rights. This lesson gives us an overview of the struggles of Mandela for making the society with no discrimination on the basis of the color, caste, race, age or gender. And वो जो समय था, that was that period actually, वो एक ऐसा समय था कि जब dark skinned people जो थे, जो blacks जो थे, उनको अपनी मूल अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया था. उनके पास अपने मूल अधिकार भी नहीं थे, बेसिक राइट्स भी उनके पास नहीं थे, खुद कमाकर खाने की भी जो है उनको आज़ादी नहीं थी. दैट वाज द कंडीशन, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन मंडेला एक्चुअली स्ट्रगल्ड हार्ड, और तब वो समय था जब नेल्सन मंडेला ने बहुत एक उन्होंने अभियान शुरू किया, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ, सोसाइटी के खिलाफ, ताकि एक ऐसा माहौल बन सके पूरे देश भर में जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई ऊंच नीच भेदभाव ना हो, और वो चीज़ जो है लिटरली आज हमें देखने को मिलती है. ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका. On May 10, 1994, Nelson Mandela has taken the vow as the first black president of South Africa.
and therefore it was becoming a newborn democratic country. Nelson Mandela took the oath as the first black president. So finally on May 10, 1994, finally Nelson Mandela took oath as the first black president, and from there onwards a new South Africa came into existence. A new South Africa means a country where apartheid system is no more, where no more discrimination was there, and everybody was equal and everybody was happy. So that was what happened after Nelson Mandela became the president of South Africa. Many dignitaries from different countries had come to be a part of the most significant day. In his speech, Mandela thanked all those dignitaries. Mandela assured his countrymen that his country would never ever experience the same suppression of one by another. So this was the actually first time after many years that people from all other countries were on the soil of South Africa. Actually, this apartheid system basically compelled other countries to restrict themselves from this South Africa. और इस अपार्थाइड सिस्टम की वजह से ज़्यादातर देशों ने क्या कर दिया था, एक तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका को बॉयकॉट कर दिया था और किसी भी प्रकार का कोई उन्होंने रिश्ता नहीं रखा था साउथ अफ्रीका से. बट वंस एवरीथिंग वाज सॉर्टेड आउट एंड वंस थिंग्स बिकेम नॉर्मल और अपार्थाइड सिस्टम जब ख़त्म हो गया और जब नेल्सन मंडेला फाइनली प्रेसिडेंट बनने वाले थे, so he gave this invitation to all the the dignitaries of different countries to be a part of this inauguration ceremony. और तब वो एक ऐसा समय था कि जब दुनिया भर के बड़े बड़े नेता जो हैं वो उनके इनॉग्रेशन सेरेमनी में हिस्सा लेने आए. एंड मंडेला थैंक्ड ऑल ऑफ देम एंड मंडेला अश्योर्ड हिज कंट्रीमैन ऑल्सो. और उन्होंने मंडेला ने अपने भाषण में अपने देशवासियों को इस बात का उन्होंने जो है आश्वासन भी दिया कि अब आगे से हमारे देश में इस प्रकार का जो है उत्पीड़न या शोषण जो अभी तक ब्लैक्स का होता रहा है, अब जो है ऐसा कुछ भी हमारे देश में नहीं होगा. सब कुछ बराबर होगा, सब लोग बराबर होंगे. Democracy had been established in South Africa, and as a result, a government of no discrimination was established. The people of South Africa sang two national anthems as a symbol of that day. Mandela recalled that the reason for this movement was that black-skinned people were exploited by the white people. And that was the day when two national anthems were sung. और उस दिन ऐसा था कि दो national anthems गाए गए थे. एक एक्चुअली ब्लैक पीपल का था और एक एक्चुअली वाइट पीपल का था. और बेसिकली इसके पीछे जो रीज़न ये था इक्वालिटी, ताकि कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में. और नेल्सन मंडेला अगर चाहते तो वो वाइट्स का जो नेशनल एंथम है उसको बॉयकॉट कर सकते थे, बट ही डिडंट डू दैट, बट रादर ही वेंट अहेड विद बोथ द नेशनल एंथम, signifying the fact that equality now exists in South Africa. People must learn to hate first, because if they hate, then they can be taught to love, as love comes from the opposite circumstances. He also says that a brave man is not that who does not feel afraid, but who conquers it. Now, a few things regarding the ideology of Nelson Mandela, his views, his opinion about the life, and what Nelson Mandela says that people must learn to hate first, because if they hate, then they can be taught to love. तो सबसे पहले तो लोगों को सीखना चाहिए कि नफ़रत कैसे करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नफ़रत को समझेंगे तभी वो प्यार को और अच्छी भाषा में समझ सकते हैं. क्योंकि लव इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली. प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है, वो प्राकृतिक चीज़ है जो हमारे अंदर से निकलती है. सो अगर नफ़रत करोगे तभी आपको प्यार का असली मतलब पता चलेगा. अगर नफ़रत की भावना आपके अंदर नहीं है तो प्यार की भावना आप नहीं समझ पाओगे. एंड ही ऑल्सो सेज दैट ब्रेव मैन he also says that a brave man is not that who does not feel afraid but who conquers it. He is saying that कि ऐसा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है या उस आदमी को हम साहसी आदमी नहीं, उस आदमी को हम साहसी आदमी कहें जिसके अंदर डर की भावना ना हो. This is not possible. If you are a human being, one thing should be in your mind, that fear encompasses each and everybody. एक चीज़ हमें जो सीखनी जाननी है वो ये है कि दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे डर नहीं लगता. हर इंसान को डर लगता है किसी न किसी चीज़ से. ओके, सो
ऐसा नहीं है कि कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको डर ना लगे, ठीक है, डर सबको लगता है, बट द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज टू ओवरकम दैट फियर, टू कॉन्कर दैट फियर। लेकिन उस डर के ऊपर जो है जीत हासिल करना ही सही मायने में एक ब्रेव मैन की पहचान है। In life, a man has two major obligations. First, towards his family, to his parents, to his wife, and to his children. And second, on the other hand, obligation towards his country, people, and the community. Everyone fulfills his duty as per his inclination and interest, but it was very tough to fulfill in a country like South Africa. Now, Nelson Mandela says that हर इंसान के जीवन में दो दायित्व होते हैं, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दो ड्यूटीज होती हैं, जिम्मेदारियां, ऑब्लिगेशंस मीन्स वन इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड टू हिज चिल्ड्रन। एक तो अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे के प्रति आपकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, आपको वो निभानी ही पड़ेगी। एंड अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वॉट टुवर्ड्स योर कंट्री, टुवर्ड्स योर पीपल, टुवर्ड्स योर कम्युनिटी, ठीक है ना, अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जो है वो भी एक आपका दायित्व है, आपकी ड्यूटी है उनके प्रति भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने परिवार से ही आपको मतलब है, बाकी दुनिया में, देश में, आपके आस पड़ोस में, आपके समाज में क्या हो रहा है आपको उससे कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी आपका एक ड्यूटी है। Everyone fulfills his duty as per his inclination and interest. और हर इंसान अपने दायित्वों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से, अपनी चाहत के हिसाब से अपनी ज़रूरत पूरी करता है। लेकिन इन साउथ अफ्रीका इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। साउथ अफ्रीका में आप खुलकर अपने दायित्वों को पूरा भी नहीं कर सकते थे। When Mandela became an adult, then he understood that his freedom was only an illusion. In fact, he was the slave of exploitation. He also understood that not only he was a slave, but his other family members were also. So नेल्सन मंडेला जब वो थोड़े से बड़े हुए, तब उनको समझ में आया कि his freedom was actually an illusion. Illusion means what? भ्रम, है ना? Means he was thinking that actually he is having his freedom, but that was not the real freedom. सो इनिशियली अगर आपको याद हो, इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि नेल्सन मंडेला डिस्कस दिस फैक्ट दैट जब वो छोटे थे तो वो जो है खुलेआम खेलते थे, घूमते थे और एंजॉय करते थे लाइफ को, और उन्हें लगता था यही फ्रीडम है। बट एक्चुअली जब वो बड़े हुए देन ही रियलाइज कि ये आज़ादी नहीं, आज़ादी का मतलब तो कुछ और है। तब उन्हें समझ में आया कि सही मायने में तो मैं आज़ाद भी नहीं हूँ, एक्चुअली आई एम ए स्लेव। Slave means what? गुलाम, है ना? And not only I am, but my whole family members are slave. लेकिन मेरा पूरा परिवार ही क्या है? गुलाम है। According to him, freedom is also mandatory for them who were suppressing others in the past. They also have the right to have it because snatchers of others' freedom is a prisoner of the same. Thus, the oppressor is as much a prisoner as the oppressed. The oppressor too is not free. So my dear children, this particular paragraph is very complicated and you need to understand it very clearly. इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से आप समझिएगा बेसिकली इसमें वो कहना क्या चाहते हैं। So literally he wants to say that कि freedom is mandatory for everybody. हर इंसान के लिए जो है आज़ादी जो है लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे वो दो चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, टू पीपल आर देयर। देखिए, एक इंसान है ऑप्रेसर और एक है ऑप्रेस्ड। ओके, ऑप्रेसर का मतलब वो होता है जो व्यक्ति दूसरे को दबा रहा है, दूसरे के ऊपर यातनाएं कर रहा है, दूसरे के ऊपर उत्पीड़न कर रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है, दूसरों का शोषण कर रहा है। दैट इज व्हाट वी कॉल हिम और कॉल देम ऑप्रेसर और ऑप्रेसर्स। एंड हु इज दिस ऑप्रेस्ड? ऑप्रेस्ड आर दोज पीपल जो दब रहे हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। मीन्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट oppressors are the white people and oppressed are the black people. अब वो ये कहते हैं कि जो ऑप्रेसर है, जो दबाने वाला है, सही मायने में वो भी एक प्रकार से क्या है? गुलाम है। वो किस चीज़ का गुलाम है? वो नफ़रत का गुलाम है। नफ़रत इस कदर उसके अंदर भर चुका है, इस तरीके से उसकी मानसिकता बन गई है, वो नफ़रत का गुलाम बन चुका है, ठीक है ना? तो उसको भी आज़ादी की ज़रूरत है, ठीक है। और जो दब रहा है, जो ब्लैक पीपल हैं,
जो दब रहे हैं, जिनके ऊपर शोषण किया जा रहा है, उनको तो आज़ादी चाहिए ही चाहिए, साथ में जो दबा रहा है उसको भी आज़ादी चाहिए। बस फ़र्क क्या है, उसको किस चीज़ से आज़ादी चाहिए, नफ़रत से आज़ादी चाहिए, ठीक है, हेट्रेड से उसको आज़ादी चाहिए। बिकॉज इफ़ यू गो डीप इनटू द चैप्टर you will find out there where it is written that he is a prisoner of hatred. Okay, Nelson Mandela has mentioned this line, he is a prisoner of hatred. So that is what Nelson Mandela has tried to explain here. The brave man is not the one who does not feel afraid, but he is the one who conquers that fear. Mandela said that every man has his duties towards his country and community too. और नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया इस लाइन को, कि डर सबके अंदर है, लेकिन डर के ऊपर जीत हासिल करना ही सही मायने में एक बहादुर व्यक्ति कहलाता है. एंड अनदर व्हाट एस्पेक्ट ही इज सेइंग दैट एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज कंट्री एंड कम्युनिटी टू. समाज के प्रति, देश के प्रति आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं जिसे आपको निभानी पड़ेंगी. नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी, यू नो, whites and blacks all are standing together, and now this is a new South Africa. Okay, पहले ऐसा नहीं था, पहले whites के साथ blacks नहीं खड़े हो सकते थे, और जिस रोड से whites जाते थे वो रोड से black people नहीं जा सकते थे. बहुत सी restrictions, discrimination था. लेकिन आज का जो नया साउथ अफ्रीका का पिक्चर आप देखिए, white, black सब मिलकर हैं, सब बच्चे जो हैं साथ में खड़े हुए हैं. So this was actually the summary of this chapter. Now my dear children, the points what actually you have to remember regarding this chapter, I'll discuss those points also. No? Point wise I'll tell you what you have to remember in this chapter, and if you remember those points very, very clearly, if those points are in your mind, then definitely I think you can easily answer all the questions of this chapter. Okay, so let's discuss those points. First is 10th of May was a day of freedom for South Africa, and there was huge gathering of international leaders and dignitaries. So you have to remember that 10th of May was that day when Nelson Mandela was sworn in as the first black president, and that was the day, for South Africa, because it was the day of freedom for South Africa, and that was the day when international leaders and dignitaries gathered there to witness that freedom. Inauguration ceremony or swearing in ceremony was being held in Union Building in Pretoria, and first non-racial government took the charge. Second important thing what you have to remember, that this inauguration ceremony was held where? In the Union Building, and this Union Building is in Pretoria. Pretoria is one of the capitals of South Africa. ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स हैं वो इसी शहर में है, प्रिटोरिया में ही है. ठीक है, एंड दैट वाज द डे व्हेन एक्चुअली ए नॉन रेशियल गवर्नमेंट finally was formed. 10th of May, we have discussed this. Nelson Mandela gave speech on the victory for justice, peace and human dignity. और नेल्सन मंडेला की जो स्पीच है उसको भी हमें याद रखना है. उनका स्पीच कौन से पॉइंट पर था? उनका स्पीच था विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, है ना. इंसान को अपने स्वाभिमान के लिए और शांति के लिए और जस्टिस के लिए, न्याय के लिए जो है, इस तीन विषयों पर विशेष तौर पे उन्होंने अपनी भाषण, अपनी बात रखी थी. Mandela pledged to liberate his people from poverty, suffering and discrimination, and this was in this speech mentioned, Nelson Mandela basically highlighted this fact that he would work for his people to let them free from poverty, suffering and discrimination. वो अपने लोगों के लिए, उनके हितों के लिए काम करेंगे, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि उनके लोग जो हैं गरीबी से और भुखमरी से और हर प्रकार की जो है भेदभाव से जो है आज़ाद हो सके. A colorful show by jets and helicopters to show military's loyalty took place. And on that inauguration, on the occasion of that inauguration ceremony, jets and helicopters, they showed their loyalty towards the new government, by flying over that Pretoria, that Union Building. Singing of two national anthems was done, the old Nkosi Sikelel by the whites and the new Daistem by the blacks. और दो नेशनल एंथम उस दिन गाए गए थे, whites के लिए भी एंड blacks के लिए. A new system that recognized the rights and freedoms of all people was formed. So far apartheid system was there in South Africa, but now that system was no more, and a new system was formed where rights and freedoms were recognized for all the people of South Africa. Mandela remembered and thanked the people who sacrificed their lives for the freedom.
और मंडेला ने उस दिन उन लोगों को भी याद किया और दिल से उनको शुक्रिया अदा किया जो लोग नेल्सन मंडेला से पहले जो है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाया और अपनी जान कुर्बान कर दी। और उनमें से कुछ लोगों का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वी शुड रिमेंबर दोज नेम्स ऑल्सो। सैल्यूटेशन टू सम ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथिली, यूसुफ डाडू एंड others. So these are a few freedom fighters, of South Africa who actually fought against this apartheid system. Mandela said in speech that a country is rich because of its people, not because of the minerals. Courage is not the absence. Okay, so now Nelson Mandela also spoke about very important aspect, and he said that if a country is recognized as a rich country by its minerals and other resources, then it is of no use. Actually, a country is rich by its people. अगर लोग वहाँ के अच्छे हैं तो वो है एक्चुअली उस देश की सबसे बड़ी उपलब्धि, और ना कि उस देश में सोना पाया जाता है, कि हीरे पाए जाते हैं, कि ये पाया जाता है, वो पाया जाता है. दैट डज नॉट मैटर. वॉट मैटर्स इज how are the people of that country. Courage is not the absence of fear but the victory over it. People should love others and not hate them due to color or religion. Love comes naturally, not by force, which is the natural goodness. Then Nelson Mandela spoke about other few aspects as we discussed it earlier, कि साहस उसे नहीं कहते कि डर ही ना हो, बिल्कुल है, डर तो सबके अंदर होता है, लेकिन डर के ऊपर जीत हासिल करना वो ही एक्चुअली में साहसी वाली बात होती है. Then he also said that people should love one another and they should not hate one another due to color or religion. Then he said that love comes naturally, not by force. प्यार एक ऐसी चीज़ जो पहले से हमारे अंदर मौजूद है और वो बिना किसी फोर्स के ही वो जो है बाहर आती है. He also stated that a man should try to make a balance between his duty to his family and duty to his community and country. A black person was treated badly and not allowed to perform his duties. He also spoke about the duties, as we discussed earlier, that every man has two obligations, one towards his family members and another for his community and for his country. And that is what is mentioned here also. And that time actually the black people, they were not at all allowed to enjoy their rights, or they were not allowed to perform the duties too. So that was the condition. According to Mandela, freedom has many aspects, like for a kid it is to run and play, for an adult it is to fulfill the needs of his own and his family. Real freedom means equal right for everyone. अब वो कहते हैं कि आज़ादी के कई पहलू होते हैं. एक छोटे से बच्चे के लिए आज़ादी क्या है? खेलना, कूदना, दौड़ना, इधर जाना, उधर जाना. छोटे बच्चे के लिए आज़ादी वहीं तक सीमित है. देन अगर थोड़ा सा बड़ा इंसान है, अडल्ट है, उसके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? अपने परिवार के लिए, अपने लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसे वो हासिल करना. बट अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, द रियल फ्रीडम मीन्स इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन. लेकिन नेल्सन मंडेला के अनुसार जो सही मायने में आज़ादी जो है, स्वतंत्रता जो है, वो क्या है? इक्वल राइट्स, सामान्य अधिकार हर इंसान के पास होने चाहिए. बस वही सही मायने में सबसे बड़ी आज़ादी है. Nelson Mandela joined the African National Congress, and one more thing you have to remember, जैसे हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, वैसे ही साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है. नेल्सन मंडेला ने जो है उसको ज्वाइन किया. He desired people to live with dignity and respect. He wanted the oppressor and the oppressed to be liberated. Liberated means to be freed, उनको आज़ादी मिले, ऑपरेसर को भी आज़ादी मिले, ऑपरेस्ड को भी आज़ादी मिले. So this was actually the summary of this chapter, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. My dear children, I hope that you have understood this. No problem if you have any difficulty, any confusion or any queries, you can ask me in the comment section. And again, I will tell you that already I have uploaded a few videos, a series of videos regarding this chapter. You can go and watch those videos where line by line explanation has been provided, so you can clear all your doubts there. So anyhow, I hope everything is quite clear. Still any confusion, you can ask me. So that was all from this video. Thank you, take care, and God bless you.